सूरज मेरा वो APN दिखा ना, वो शेड्यूल है ना 12:05 निफ्टी वेबिनार। ठीक है, ओके ओके। So very good afternoon to all, and welcome all to today's session. My name is Rohit and I'll be your co-host for this session. And today we'll be presenting the session on the Bank Nifty weekly option expiry. So जैसे कि सब जानते हैं कि आज बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी था एंड आज जो है दैट इज द एक्सपायरी ऑफ दिस निफ्टी 50 का कल है अपना एक्सपायरी। सो आज हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं कि दैट बैंक निफ्टी का क्या व्यू लग रहा है एंड बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड साइमल्टेनियसली वी विल बी ऑल्सो गेटिंग द रिपोर्ट्स की दैट जो हमारे एनालिस्ट ने शेयर किया मॉर्निंग में एंड होपफुली लाइक यू मस्ट हैव रिसीव द मेल ऑल्सो रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट कि आज बैंक निफ्टी का क्या व्यू है, इसका ओपन इंटरेस्ट क्या है। तो मेरे साथ करण पाए हैं, ही इज अ रिसर्च एनालिस्ट एंड हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस इनटू द कैपिटल मार्केट, इनटू द डेरिवेटिव्स एंड इक्विटी एंड करेंसी एंड कमोडिटीज। Coming back to the this bank nifty अभी ट्रेड हो रहा है 51,180 पे। ओपन वॉज 51,218 एंड हाई वॉज 51,420 एंड लो वॉज 51,047। सो अभी बैंक निफ्टी थोड़ा मीन्स जो उसका हाई था अभी वो थोड़ा लो चल रहा है, 300 पॉइंट थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, अभी ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है। सो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हम लोग के रिसर्च एनालिस्ट ने पब्लिश किया है, दैट इज बैंक निफ्टी इज सीन अ डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट and with a price decrease of 0.69% indicating a long unwinding and the highest open interest on the call side was 51,500 followed by 51,600 and 52,000 which may act as a immediate resistance, and on the put side it is seen at a 51,000 strike followed by 5800 and 5500 which may act as a immediate support. So ये support and resistance है call and put side से। Now for the next week, that is जो next week की expiry है बैंक निफ्टी का, उस पे call spread का this strategy दिया गया है, that strategy for the 18th week 18th September, that is buy 51,300 call with a range of 370 and 340 and sell simultaneously this bank nifty at 51,800 call within the range of 165 and 195। break even रहेगा that is 51,475, जो risk है वो 2,625 रहेगा and reward is 4,875। so this is your payoff graph chart, okay, जो हमारे एनालिस्ट ने पब्लिश किया हुआ है। Now with this I'll hand over the session to Karan Pai to give you the this view on the bank nifty की क्या support resistance लग रहा है, बैंक निफ्टी आज क्या व्यू लग रहा है and simultaneously बैंक निफ्टी का क्या ट्रेंड लग सकता है, क्योंकि करण विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द इंट्राडे कि इंट्राडे में क्या सेटअप कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे आज आप बैंक निफ्टी का कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली ये तो सामने आपकी स्ट्रेटेजी है अगर आपको ये नेक्स्ट वीक के लिए फॉलो करना है जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट ने पब्लिश किया हुआ है। So with this, I'll hand over the session to Karan. Karan, all over to you. Yeah. Thank you, Rohit. I'll just share my screen. Give me a minute. Okay. So can someone confirm that I'm audible? My screen is visible? Yes, Karan, you're audible, loud and clear. All right, great. So, like always, we'll start with the supports and resistances and the chart setup की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखता हूँ मैं। अगर आप देखोगे तो मेरा चार्ट जो है वो काफ़ी क्लीन होगा and I add 3 moving averages to it. So one is a 5-period exponential moving average, another one is a 21 period exponential moving average. Sorry, I just changed the parameters to 21. या एंड लास्ट जो है वो मैं इसे 13 पीरियड करता हूँ। Yeah, so the logic behind having these 3 moving averages is one being a very fast line, जो moving average है वो बहुत fast है, which is the 5 period, थोड़ा slower जिसमें थोड़ा lag है, that is 13 day, and जो मेरा ultimate जो है जो trend बताता है that is the 21 day EMA। एंड मेरे पास जो डिफॉल्ट
पीरियोडिसिटी का जो RSI है, आई मीन डिफॉल्ट पैरामीटर्स वाला RSI, वो भी प्लॉटेड है, विच इज बेसिकली 14 पीरियड RSI with average on it. And ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज सिंपल ट्रेडिंग व्यू का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एंड अगर मैं सबसे पहले देखूं तो इफ आई लुक एट द ओवरऑल प्राइस एक्शन, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ओवर द पास्ट 3 days, yeah, we have seen a bit of an up move, especially 9 सितंबर का जो ओपनिंग के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हम लोग को दिखाई दिया था, जिस दिन अबाउट 1.07% से पॉजिटिव में क्लोज हुआ था बैंक निफ्टी। एंड दैट वाज उस दिन के बाद अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे आया नहीं है। नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव प्लॉटेड अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट हियर, एंड आप देख सकते हो कि अराउंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल से वो घूम गया था, बैंक निफ्टी घूम गया था। एंड उसके बाद के 2 दिन जो थे, विच इंक्लूड्स इवन टुडे, ब्रॉडली एक रेंज में चल रहा है। एंड अगर ब्रॉडर रेंज में देखो तो नीचे में 51,000, ऊपर में अराउंड 51,500, 51,400, which is basically today's high. So what I expect is a broader range trading kind of day. And other now that I know, where the moving averages are placed, where the price is placed with respect to the moving averages. So अगर आप यहाँ पर एक interesting चीज देख सकते हो, all 3 moving averages have been absolutely flat. Correct order है, as in 5 is above the 13 and the 21, 13 is above 21. It's been absolutely flat. So that is something that you need to keep in mind when you're looking at the bank nifty charts for the day. Now we'll go on to the intraday setup, and अगर मैं देखूं intraday में, मुझे यहाँ पर थोड़ा एक डाइसीनेस दिखाई दे रहा है, which is if you look at the 15-minute chart, moving average positioning के point of view से अगर आप देखोगे तो prices are currently placed below the moving averages. So वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी एक नेगेटिविटी बिल्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, बट nonetheless I'll take a very neutral view and I'll go ahead with what my trend lines are telling at this point of time. सो अगर आप देखोगे ऊपर में रेजिस्टेंस अगर मुझे प्लॉट करना है, फर्स्ट मेरा जो फर्स्ट गो टू टूल है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस। एंड अगर आप देखो तो आज के सेशन का जो हाई था, yeah, that fell around a resistance zone. So broadly I'll be able to say कि broader जो resistance zone है, that is somewhere in between 51,400 and 51,300. So that zone is expected to act as a resistance. And अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ to find out supports, then somewhere around 51,000 is where I see a bit of a support. And beyond that, अगर उसके नीचे भी अगर मार्केट जाता है, then we might see it move lower, probably towards 50,900, 50,850 level kind of. So overall अगर मैं देखूं intraday charts, they seem a bit weak, but अगर broader point of view से अगर मैं देखूं, as long as it stays above 51,000, there is a chance of it either consolidating or inching a bit higher. So now that that is done, what I would suggest is, if you have any questions or queries about technical part till now, this would be the right time to put it in. And now we'll be getting into open interest data. And before that, what I would like to say is I think in the previous week we had a session on options, wherein we had explained bull call spread, bear put spread, or the bull spreads and the bear spreads, and some basics about options. So just go through that अगर आपको एक deeper understanding चाहिए about the spread strategy that is discussed in the report. So now we will look at the OI data. And अगर मैं यहाँ पर जाऊँ बैंक निफ्टी सॉरी NSE के वेबसाइट पे, I just type in बैंक निफ्टी and hit enter, and ऐसा कुछ पेज आपके सामने ओपन होगा, and then click on option chain. करेक्ट। एंड बिकॉज टुडे इज एन एक्सपायरी, वो बाय डिफॉल्ट आज का डेट ले लेगा। एंड लुक फॉर सम सॉर्ट ऑफ ओआई कॉन्सेंट्रेशन जब मैं बोलूँ, मतलब आपके ओपन इंटरेस्ट के जो फिगर्स है वो काफी हाई होंगे। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग एट द ऑप्शन चेन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल जस्ट से calls are on the left hand side, puts are on the right hand side, and the highlighted area is basically in the money and the lighter area is basically out of the money. And अगर मैं देखूं तो 51,300 पर I am able to see concentration. And if I look at the bank nifty spot, it is trading somewhere around 51 150, 51 160 zone.
सो 300 को मैं स्किप करूंगा कि इट इज वेरी क्लोज टू द एटीएम एंड अदर देन दैट अगर मैं देखूं 51 500 51 600 पर जो है कंसंट्रेशन थोड़ा है अराउंड 9 लाख का ओआई बिल्डअप 9 लाख से थोड़ा ज्यादा ही ओआई बिल्डअप वहां पे हम लोग को दिखाई दे रहा है सो दैट वाज आल्सो द लेवल व्हिच यू नो वी took as a bit of a resistance zone अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने बोला था कि अराउंड एक जोन जो बिल्डअप हो रहा है दैट इज बिटवीन 51 500 51 400 51 350 का सो वहां पर हम लोग को एक थोड़ा वाई एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है एंड इफ यू लुक ऑन द पुट साइड 51,000 being a round figure and also you know crucial support on the chart वहां पर थोड़ा ओआई बिल्डअप होते हुए हम लोग को दिखाई दे रहा है नाउ बेयर इन माइंड द चार्ट दैट आई एनालाइज्ड वाज द स्पॉट एंड अगर आपको ट्रेड करना है देन यू विल बी लुकिंग एट द फ्यूचर्स और अगर आपको ऑप्शंस देखना है देन दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ बट आई प्रिफर टू डू ऑल माई एनालिसिस ऑन द स्पॉट चार्ट बिकॉज कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर आपका डेरिवेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइन देन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइन प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइन चार्ट will be a bit more sensible. But then again, it depends from person to person. If you're more comfortable looking at the futures chart, then fine, not at all an issue. एंड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन मुझे अराउंड 51,000 के पुट्स में दिखाई दे रहा है फॉलोड बाय 5,800 which again was something that we determined. So broadly जोन जो है वो मुझे लग रहा है लगभग 51 से लेके 51 500 51 800 का होगा सो दिस कुड बी अ ब्रॉडर जोन एंड इफ यू आर looking at the chart right now since the past three candles मुझे एक थोड़ा buying tail दिखाई दे रहा है now to understand what a buying tail is we have an candlestick session today evening. Please make sure that you attend that. But अगर मैं briefly बोलूँ तो ये जो long lower wicks है, one can call it a buying tail because the logic behind that is there is some buying interest and the bulls are actually pushing the prices higher. So that being the logic. Other than that, अगर बैंक निफ्टी को लेके किसी को कुछ क्वेरी है कुछ डाउट है प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन द चैट बॉक्स and after this I'll be moving over to how the nifty looks on the chart what how the sectors are doing what are the nifty 50 stocks that are performing which are lagging and all those sort of things. सो जैसे कि करण ने बताया आज दैट इज बैंक निफ्टी का एक जो सपोर्ट है दैट इज एट 51,398 राइट नाउ एंड जो रेसिस्टेंस है सो ये करण आपने इंट्राडे में दिखाया है या फिर ये वन डे का चार्ट है? यस यस नो ये जितने भी लेवल्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं दे आर ब्रॉडली इंट्राडे यहाँ पर बिकॉज वी हैव सीन टू सेशन कंसोलिडेशन लेवल्स जो है थोड़े मैच होंगे विद रिस्पेक्ट टू इंट्राडे और पोजिशनल सेटअप. So 51,000 अगर आप देखोगे on intraday as well as from a positional point of view seems to be a bit crucial. So if you have any queries, anything, so those who are attending this session from our WebEx channel, they can post in the WebEx chat, and those who are attending this session from our YouTube channel, then they can post that in a live chat. So Mr. Karan Pai is here, like to address your query. Meanwhile, Karan, if you can just compare with the Bank Nifty and the Nifty 50 chart, that how it is moving right now. क्योंकि कल बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंट अच्छा मिला था एंड कल हम लोगों ने परसों हम लोगों ने इनफैक्ट हमारे एनालिस्ट ने कॉल भी दिया था 5800 का कॉल दिया था कॉल बाय करने का दैट वाज द लेवल ऑफ अराउंड दिस 150 200 के बीच में दिया था जो कि ऑलमोस्ट 500 टच करके भी आया. So Karan, if you can just explain between the Bank Nifty and the Nifty 50 intraday chart that how it is looking actually and क्या व्यू देख सकते हैं हम लोग आज? या इंट्राडे चार्ट्स की मैं बात करूं मैं 15 मिनट चार्ट ही ज्यादा प्रीफर करता हूं एंड अगर आप यहां पर देखोगे सिंस द मॉर्निंग निफ्टी में जो है थोड़ा एक अपवर्ड ड्रिफ्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है एंड नाउ आज के दिन का ओपनिंग अगर आप देखोगे इट हैड बीन अ बिट फ्लैट एंड मेजरली बिकॉज एशियन मार्केट्स थोड़े मिक्स थे यूएस मार्केट्स भी थोड़े मिक्स थे कल का जो क्लोज था यूएस मार्केट्स का दे वर अ बिट मिक्स बिकॉज the traders at the moment they are waiting for the US inflation data. So वो थोड़ा क्रूशल हो जाता है बिकॉज इन्फ्लेशन डेटा पे इन्फ्लेशन डेटा पर दे टेक अ डिसीजन एज टू
what the Fed has to do with regards to the interest rate cut or halt or rise and all those things. So अभी के हिसाब से the traders are looking at a rate cut by the Fed. So अगर inflation if it is in line, so it will be एक implication उसका होगा. We'll see how that pans out today evening. बट nonetheless ahead of a crucial US data थोड़ा मिक्स बैक था. US मार्केट्स अगर आप देखो या एशियन मार्केट्स अगर आप देखो दिस मॉर्निंग, सो उसके रहते निफ्टी भी थोड़ा फ्लैटिश ओपन हुआ है, बट अभी अगर आप देखोगे थोड़ा अपवर्ड ड्रिफ्ट आ रहा है. एंड जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया था, ये जो मूविंग एवरेजेस था करेक्ट ऑर्डर देवर फ्लैट, बट यहाँ पर हम लोगों को बेसिक एक थोड़ा अपवर्ड ड्रिफ्ट उसमें भी दिखाई दे रहा है इन द 15 मिनट चार्ट. इफ आई गो टू द डेली चार्ट, पिछले 3 दिनों में हम लोग को एक अपमूव दिखाई दिया है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैड मेंशन्ड अबाउट दिस Fibonacci level yesterday also, wherein we were bouncing off somewhere in between 38.2 and 50% retracement. So ये सारी चीजें जो है थोड़ी क्रूशल हो जाती है when you are looking at a chart. बट ओवरऑल एट दिस पॉइंट एट दिस जंक्शन मुझे लग रहा है कि निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस के चांसेस थोड़े ज्यादा है. And of course at the end of the day the prices determine everything, so you always keep that in mind. All we can do is look at the chart and understand what the probability of a particular move is. बट उससे ज़्यादा कुछ हम लोग चार्ट देखकर या डेटा देखकर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते. इट शुड बी मोर ऑफ रिएक्शन दैन एस्टिमेशन. Other than that, what I would also like to touch base on is this what has been happening in the stocks. Karan, before we jump into the stocks and before we look at the sectors, कि कौन से sectors perform कर रहे हैं, there is one query from our YouTube channel that if you can just help us the understand about the Bank Nifty expiry and कि क्या support resistance है intraday में, and next week का हम लोग एक क्या देख सकते हैं in this Bank Nifty का support resistance क्या ले सकते हैं. या डेफिनेटली रोहित, अभी जैसे कुछ ही देर पहले हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया था कि 51,000 जो है वो थोड़ा मेक और ब्रेक लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए. एंड ये पोजिशनली एंड इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज 51,000 इट्स अ राउंड नंबर. एंड चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो 51,000 से लेके 51,930 तक, सो समवेयर इन बिटवीन 51,000 50,900, ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है with regards to the bank nifty. And bear in mind कि this is the spot level, so अगर आप फ्यूचर्स पे कर रहे हो तो आपको प्रीमियम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ये सारे लेवल्स. एंड ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो आज के सेशन का जो हाई था विच वाज क्लोज टू 51,400 अगेन ऑन द स्पॉट, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दीज आर द की लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ. ये आपका इंट्राडे का लेवल है. यस, इंट्राडे. एंड बिकॉज पिछले 2 दिनों से देयर हैज बीन अ ब्रॉडर कंसोलिडेशन. ये 51,000 का जो लेवल है वो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा एक रेड. बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, दे सीम टू बी आउट परफॉर्मिंग एट द मोमेंट, फॉलोड क्लोजली फॉलोड बाय एशियन पेंट्स. एंड वहीं डाउन साइड पे अगर हम लोग देखें तो टाटा मोटर्स जो है वो 5% से ज्यादा गिरा हुआ है, फॉलोड बाय ओएनजीसी विच इज डाउन बाय 3.15%. Now, bear in mind, all this data is readily available on NSE. Use the NSE website to get all these data points. किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, देन फील फ्री. एंड अगेन मैं आपको I am repeating myself, but today we do have a webinar at 4, wherein we will be discussing about the candle patterns, the psychology, the anatomy of a candle. I mean, how a candle pattern is made, the psychology. थोड़ा हम लोग सिंगल कैंडल, मल्टीपल कैंडल पैटर्न्स पर भी फोकस करेंगे, बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम कि हम लोग उसमें कितना कवर कर पा रहे हैं. So my strong suggestion would be for that you guys do attend that session. I'm sure it will help you at one point in your trading, at some point in your trading. So, those who are attending this session from our YouTube channel, I would suggest you that you can click on this Access Securities Live. एंड लाइव के अंदर आपको सारे हम लोग के अपकमिंग वेबिनार्स दिखाई देंगे, जैसे कि करण ने बोला कि दैट इज बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स फॉलोड बाय द कैंडल स्टिक्स एंड पैटर्न्स. वो आज शाम 4 बजे से उसका सेशन है.
So you can click on the notify icon and means that so that you can get the notification of that कि आपका ये सेशन आ गया. Simultaneously next कल हम लोग का सेशन this Nifty 50 में and this Friday को session we are conducting the advanced option strategy session at 2:30 p.m. It will be live both in our WebEx channel and YouTube channel. So that in that session we'll be covering about the straddle strangles and counter strategies specifically and the options Greek क्या होता है इस पे कि दैट ऑप्शंस ग्रीक में थीटा टाइम वैल्यू कैसे काम करता है कैसे ऑप्शंस प्रीमियम जीरो हो जाता है क्यों जीरो होता है अगर आप सेलर है मार्केट में तो आपके लिए क्या विन सिचुएशन है इफ यू आर अ बायर इनटू द मार्केट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इन दैट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट you can get the notification of this upcoming sessions also. So if you have any queries, anything, then you can directly put in the chat box. So Karan, we are having the query means from our this WebEx channel. That is, if you can just explain about the moving average crossover and the RSI actually. Sure. RSI का एक 80-30 जो जोन होता है तो आज का बैंक निफ्टी जब अपने यूरोपियन मार्केट खुलेगा 1 बजे 1:30 बजे इनफैक्ट सो क्या व्यू हो सकता है बैंक निफ्टी का इनफैक्ट. Yeah. So RSI crossover या sorry the moving average के ट्रेड सेटअप्स को लेके यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जांपल है. अगर आप देख सकते हो रोहित जी या जो भी जिन्होंने भी वो सवाल पूछा है आई होप आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो मूविंग एवरेज का जो सेटअप है ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में चलता है एंड व्हेनेवर यू नो द मार्केट गेट्स इनटू अ रेंज ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस यू विल टेंड टू हैव अ लॉट ऑफ इन एंड आउट्स एंड अगर आप देखोगे यू नो मल्टीपल लॉन्ग सिग्नल्स आए एंड फॉलो थ्रू नहीं था डाउन सिग्नल्स आए फॉलो थ्रू नहीं था. So this is the kind of thing that happens when you are in a range bound market. बट जैसे ही आपको सिग्नल मिल गया जैसे आई वुड से फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि 6 सितंबर का जो फर्स्ट कैंडल था. नाउ दिस इज अ 15 मिनट चार्ट. सो 6 सितंबर का जो कैंडल था 9:15 का एक ब्रेक डाउन था कंसोलिडेशन से थोड़ा नीचे आया बिलो द मूविंग एवरेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स. एक रीटेस्ट के अटेम्प्ट के बाद वी हैड हैड अ स्मूथ मूव. करेक्ट बहुत ही ज्यादा स्मूथ मूव था एंड एट द सेम टाइम अगर आप ये भी देखते हो कि आरएसआई ने कैसे रिएक्ट किया है. सो आरएसआई के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है कि ये जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड जितने भी आपने सुने होंगे करेक्ट दीज थिंग्स दे ओनली वर्क इन अ पिक्चर परफेक्ट या एक टेक्स्ट बुक सिनेरियो में ही काम करते हैं. सो एक आपने जितने भी बुक्स पढ़े होंगे रिगार्डिंग आरएसआई उसमें भी उन लोगों ने ये मेंशन किया होगा कि ओवरबॉट कैन रिमेन ओवरबॉट ओवरसोल्ड कैन रिमेन ओवरसोल्ड. अभी सो ये बाउंड्स जो होते हैं दैट यू हैव टू यूज वेरी केयरफुली एज इन ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे ये कैसे चल रहा है एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपनी स्ट्रैटेजीज पे अप्लाई कर सकते हो. But from a personal point of view, RSI overbought, oversold is not something that I would look for. What I look for is basically divergence. Divergence भी कब होगा when you know your prices are very close to a support level, very close to a resistance level. वहां पर आप थोड़े डाइवर्जेंस देख रहे हो एंड देन आपके जो XYZ पैरामीटर्स होंगे टेक्निकल्स के वो सब आपके मीट हो रहे हैं तो येस द डाइवर्जेंस डज मैटर. बट आपको कहीं पे रैंडम डाइवर्जेंसेस दिखाई दे रहे हैं सो शायद वो भी नहीं चले. बट again what I mean to tell is कि at this point there was a classic breakdown. Moving averages में अगर आप देखोगे 5 is below the 13, 13 is below the 21. एक क्लासिक ब्रेकडाउन था एंड आपको ये पूरे सेटअप ने इन ट्रेड रखा टिल अराउंड 9 सितंबर. 9 सितंबर के जो फर्स्ट कैंडल में जहाँ पे इट यू नो मैनेज टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड go above the 5 period and next candle में almost 20 period ये में भी उसने निकाल दिया. बट nonetheless एक स्मूथ मूव हम लोग को मिला एंड वैसे ही अगर आप देखोगे आफ्टर आई थिंक दिस वाज 9 सितंबर के ही दिन अराउंड 1:15 को. नाउ एक चीज मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिकमेंडेशन. आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट कि जो मुझे चार्ट पर ये पॉइंट पर दिखाई दे रहा है मैं जस्ट वो मेंशन कर रहा हूँ. सो 1:15 का जो कैंडल था अराउंड 9 सितंबर को प्राइसेस जो थे वो सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर थे एंड एक करेक्ट ऑर्डर हम लोग को इसमें ब्रेकआउट दिखाई दिया था. सो दिस इज द वे विथ विच यू कैन यूज योर मूविंग एवरेजेस एंड RSI. एंड एक आपको मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा कि देयर इज नो रेडीमेड स्ट्रैटेजी. करेक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यू नो आपको
आलू की सब्जी पसंद है तो कोई सीधा आके आपको आलू की सब्जी परोस देगा. नो, यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ. आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना आलू चाहिए, उसमें कितना मिर्ची चाहिए, कितना नमक चाहिए. सो इट्स नॉट one product for everyone. So every person's methodology to read a chart is quite different than the one. अभी मेरी एक स्ट्रैटेजी होगी, रोहित की अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, एंड हो सकती है कि हम लोग की दोनों दोनों चल जाए यूजिंग द सेम पैरामीटर्स. सो एक चीज जब भी आप ट्रेडिंग में एंटर कर रहे हो, वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इज यू हैव टू कम इन विद योर स्ट्रैटेजी एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट स्ट्रैटेजी रिलीजियसली. अब वो स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड हो, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. कितनी चली हो पास में, कितनी बार फेल हुआ है, वो सब स्टैटिस्टिक्स आपको आपके हिसाब से देखना है, आपके हिसाब से अंडरस्टैंड करना है. So thank you so much, Karan, for giving such a great insight about the Bank Nifty followed by the Y data. So जो अभी हमारे YouTube चैनल में अगर अभी जुड़ रहे होंगे तो यू कैन प्ले द रिवाइंड सेशन एंड यू कैन सी आज करण ने क्या बताया है एग्जैक्टली अबाउट द बैंक निफ्टी एक्सपायरी. एंड ऑल्सो हमारे रिसर्च एनालिस्ट ने रिपोर्ट पब्लिश किया था टुडे मॉर्निंग कि बैंक निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है नेक्स्ट वीक फॉलोड बाय द स्ट्रैटेजी और दैट इज अ कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी, जिसमें कि मोटा मोटा आपका काम मीन 25 से 30 से 40 हज़ार रुपए के बीच में आपका वो काम हो सकता है, दैट इज कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी में, जहां से आपको एक कॉल बाय करना है, साइमल्टेनियसली आपको एक कॉल सेल करना है. So with this, I'd like to thank everyone for attending today's session, and we'll see you today evening, that is at 4 p.m. on candlestick charts. So again मैं आपको बताना चाहता हूँ कि that जो लोग YouTube से attend कर रहे हैं, then they can go and click on the notify and subscribe the channel so that you can get the notification on this candlestick charts, and tomorrow on the Nifty 50 session again at 12 p.m. So with this, I'd like to thank you everyone for attending today's session. Thank you so much, and thank you, Karan.